हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विल कंटिन्यू विद आवर HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर ये हम फ्री कोड कैंप से कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक सर्टिफिकेशन कर लिया था, एक क्विज कर लिया था बेसिकली, जिसमें हमें एक ट्रिब्यूट पेज बनाना था। अब सिंस दैट इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो मैं इसकी बात कर रहा था, हमने ट्रिब्यूट पेज का सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है और CSS के बारे में समझना, बेसिकली सूडो सेलेक्टर्स। आई थिंक CSS सूडो सेलेक्टर्स मतलब वो डबल कोलन वाला चीज। विल चेंज स्पेसिफिक HTML एलिमेंट्स एंड इन दिस कोर्स विल बिल्ड अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना के CSS सूडो सेलेक्टर्स सीखेंगे। ओके, तो बैलेंस शीट ये होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट योर HTML विद द डॉक टाइप HTML वाला चीज। हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स। हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स के बाद गिव योर हेड एलिमेंट द अप्रोप्रिएट मेटा एलिमेंट। मेटा व्यू पोर्ट। सो फटाफट एक्चुअली रेफर कर लेते हैं कुछ लास्ट के टास्क्स में से हमने कैसे किया था। मे बी ये वाला। ओके, मेटा कैरसेट UTF-8। तो ये तो सही है, बस एक क्लोजिंग टैग लगाना है। एंड मेटा नेम व्यू पोर्ट एंड a title element। क्योंकि हम CSS सूडो सिलेक्टर्स के बारे में समझने वाले हैं, तो लेट्स राइट दैट एज द टाइटल। और लिंक relative style sheet and file name href। href is equal to styles dot css and close. Okay, your HTML element should have an opening tag with language। अच्छा, हाँ, indicating the document is in English, ये वाला पार्ट रह गया था। ओके, first part done। Within your body element, nest a section element। Section, open close। और विद इन द मेन एलिमेंट भी बोला है, तो कुछ ऐसे। ये भी डन। विद इन योर सेक्शन एलिमेंट एक H1 एलिमेंट डालना है
with a nested span. तो होपफुली वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है. ओके, डन. Screen readers announce HTML elements based on the document flow. We will eventually want the balance sheet to have a heading of balance sheet, subheading of ये वाला चीज, Acme Widget Corp. However, this order does not make sense if announced by a screen reader. सही बात है. So give your existing span a class of flex and add two span elements within it. Give the first the text Acme Widget Corp and second वाले को balance sheet. You will use a CSS to reverse the order of the text on the page, but the HTML order will make sense for a screen reader. ठीक है, done. Below your h1 element, create a div element. Give it an attribute. Here's ये screen reader से hidden होना चाहिए, so aria hidden is equal to true. Okay. Within your div element, add three span elements. क्लास एट्रीब्यूट सेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ईयर. एंड ये वाला टेक्स्ट 2019 2020 2021. Done. Below your div element, add a new div element. क्लास क्या है? टेबल रैप. Add three table elements. इसके अंदर add three table elements. You will use a CS. तो CSS से स्टाइल करेंगे अपन इससे. HTML tables use the caption element to describe what the table is about. Caption element should always be the first child of a table, but can be positioned with the caption side CSS property. So caption element to your first table. पे caption element डालना है. Give it the text assets. Okay. The table head and table body elements are used to indicate which portion of your table is the header and which is the primary data. So add a T head and T body to your first table below the caption element. So T head of a T body add कर दिया. Okay, so table row element, a TR element is for table row और ये हर रो के इसमें रहेगा. So within your T head एक table row add करो and in your new TR element add a TD.
TD followed by 3TH elements. The TD element indicates a data cell where TH indicates a header cell. तो पहले तो आई थिंक TH करना है. तो TD फर्स्ट करना है. ओके. The TR element should have TD element as their first child. फिर वर्क करेगा everything. Great. Within each of your new TH elements, ये वाले, set nest a span. Span class is equal to SR only year. Where 2019 close. So the same process. 2020 के लिए, 2021 के लिए. Give your TH element, the third TH element, a class is equal to current. Leave the TD element empty. ठीक है. क्लास एट्रीब्यूट करंट भी डाला है एंड ये बोल रहा है कि SR ओनली ईयर भी चाहिए. ओके ओके. इट्स TH इसका ठीक होगा. यस. सम कंफ्यूजन. ठीक है. विद इन योर टेबल बॉडी एलिमेंट ऐड 4 टेबल रो. Table row. Give the first 3 a class of data and the fourth total. In your first table row, add a TH element. Within with the text, ये वाला चीज. Wrap all of that text except cache in a span element. Class जो है वो description होना चाहिए. Following that, add 3 TD elements. $25, $30, and $28. और TD को class is equal to current.
Done. In your second tr element, add a th. टेक्स्ट ये होना चाहिए. इस चीज को स्पैन में रैप करना है. क्लास इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड फिर टीडी ऐड करने हैं. $54, 56, 53, and last वाले को class is equal to current. This also works. In your third table row, add a th element. So th span element class description. So 650, 728. Class is equal to current. Okay. In your fourth wala, total assets, th, assets span में डालना है. Class is equal to sr screen reader only and फिर 3 td 579. 736, 809. Class is equal to current. Okay. So a table अब बन गया है eventually. Now time to move to the second table. Start by giving it a caption element, liabilities. And then add your T head and T body. Within your T head, add a T row. And inside that, add a TD and 3TH. Add TD and 3TH. Give each TH a span element.
क्लास इज इक्वल टू SR ओनली एंड टेक्स्ट रहेगा 2019 2020 and 2021. SR dash only, ना कि SR space only. Okay, within the T body, add 4TR. Class is equal to data. Last वाले को total. Works. Okay, within the first TR, add a table header. इसको ही ऊपर से उठा लेते हैं फटाफट. Okay, फिर 500, 250 and 0. Class is equal to current. I think ठीक है, हो गया. नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे आएगा ये चीज स्पैन क्लास डिस्क्रिप्शन ये सब सही है. 200, 300, 400. सो 200, 300, 400. I think rest is good enough. I think I pasted it in the गलत जगह, तो यहाँ पे होना चाहिए. टू हंड्रेड, 300, 400. ओके. हाँ. सेम चीज रिपीट करनी है फॉर द नेक्स्ट वन. यहाँ पे आएगा क्रेडिट एंड यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट कार्ड.
50, 50, 75. 50, 50, 75 works. Okay. अब last total liabilities. So total इधर and liabilities इधर, class attribute SR only. Seven fifty, 600, 475. 750, 600, 475 latest जो है वो current. Cool, ये भी works. Okay, अब third table. Caption open close. हम लिखेंगे net worth. Set up a table header and body. Table header. Table body. Great. Within your T head, create a TR. In that, 1 TD or 3 TH. So 1 TD, 3 TH. Within each of the TH, add a span class SR only and वहाँ पे 2019 2020 and 2021. ओके, ये भी चल गया. Within the T body, add a TR. ठीक है. Within a T body, add TR. Class is equal to total. In that, add a TH with the text total net worth and wrap net worth ठीक है. फिर 3 TD एलिमेंट्स डाला. लास्ट वाले को क्लास इज इक्वल टू current dollar minus 171 for the first one, 136 for the second one,
and 334 for the third one. Boom, चल गया. Time to style your table. Start by resetting the box model. तो पहले HTML selector box sizing property to border box. फिर body selector font family sans serif. कलर जो है वो होगा 0A23. Before you go too far into the styling, you should make use of the SR only class. You can use CSS to make elements with this class completely hidden from the visual page, but still be announced. ठीक है? तो CSS you are about to write is a common set of properties used to ensure elements are completely hidden. ठीक है? तो इस तरीके से span जहाँ पे क्लास जो है SR only नहीं है, नहीं, we'll select any span element whose class includes SR only, then create a selector border जो है वो 0. ओके. फिर एक clip property is used to define the visible portions of an element. Okay. The clip path property determines the shape of the clip property it should take. You need to size these elements down. Give your this selector width and height 1 pixel. Width 1 pixel, height 1 pixel. ठीक है. ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन. एंड नो रैप. Finally, you need to take these hidden elements out of the document flow. Okay. So give this selector a property, position property, absolute, padding property 0, and margin -1.
पिक्सेल्स। ओके, ये भी चल गया। टाइम टू स्टाइल योर टेबल हेडिंग। क्रिएट एन H1 सेलेक्टर। मैक्स विड्थ देना है 37.25 REM। मार्जिन प्रॉपर्टी टॉप बॉटम पे 0, लेफ्ट राइट पे ऑटो। पैडिंग प्रॉपर्टी में 1.5 REM होगा टॉप बॉटम एंड 1.25 REM होगा लेफ्ट राइट। फ्लेक्स कंटेनर H1 में फ्लेक्स सेलेक्टर, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, column reverse. This will display the nested elements from the bottom to the top. ओके, हटा के देखते हैं। ओके, ये एक्मे विजेट नीचे आ गया। गैप प्रॉपर्टी 1 REM, गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। The first of type pseudo selector is used to target the first element that matches the selector. तो बेसिकली इससे हम फर्स्ट स्पैन सेलेक्टर पकड़ेंगे in the flex container. Remember that your span elements are reversed visually, so this will appear to be the second element on the page. Font size 0.7 EM. पैक में विजेट कॉर्प छोटा हो गया। ओके, अब लास्ट ऑफ टाइप सिलेक्टर, तो H1 में डॉट फ्लेक्स, उसमें लास्ट ऑफ टाइप सिलेक्टर 1.2 EM। ओके, बैलेंस शीट का फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। Wrapped your table in a section element. Now you can style that to give your table border. Create a section selector. Max width देना है 40 REM. Margin 0 auto. Border 2 pixels. Solid hash D0 D0 D5. ओके, ये सेक्शन पूरा इसके अराउंड बॉर्डर आ गई है।
Last part of your table heading is years. Create a year selector or enable flexbox. Justify content. जस्टिफाई कंटेंट एंड ना, तो एंड में क्या आएगा, लेट्स सी, फ्लेक्स एंड। और पोजीशन शायद फिक्स्ड होनी चाहिए मे बी। और टॉप 0। पोजीशन शुड बी स्टिकी, टॉप 0। ओके, वर्क्स। Now apply the some color to your ears. So color and background color hash 0A0A23. ठीक है, so calc function is a CSS function that allows you to calculate a value based on other values. ठीक है, so you can calculate it to you can use it to calculate the width of the viewport minus the margin. Okay, ईयर्स को एक मार्जिन देना है of 0 and -2 pixels. पैडिंग देनी है 0.5 rem. ओके, कुछ पैडिंग आ गई है यहाँ पे। Position sticky. Move the element into its own stack to ensure your years element does not get hidden by different stacks. Z index property set करनी है। Select the text within your years by creating a year span class selector. It will target any span element with a class attribute. Bold font, width 4.5 rem. टेक्स्ट अलाइन होगा राइट। बोल्ड कैसे करेंगे? ओके, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड।
टेबल रैप क्लास, पैडिंग रहेगी 0.75 REM, 1.5 REM और 0.75 REM। Okay, table. Before you start diving into the table itself, your span elements are currently bolded. Okay. Create a span selector and give it a font weight normal. ओके, तो ये वाला पार्ट जो है नॉट बोल्ड हो गया। Rather than having to constantly double check you're not overwriting your earlier properties, you can use the ये वाला important keyword to ensure that these properties are always applied। ठीक है, give each property in your कहाँ पे, यहाँ पे, oh, zero important like this। Now that you have added the important keyword, you can remove the from not SR only from your span selector। Okay, done। हम्म, ठीक है, काफी नुआंस्ड है। टेबल सेलेक्टर collapse which allows the cell borders to collapse into a single border। ठीक है, instead of a border around each cell, also set the border property 0। ठीक है, width property 100, margin top 3 REM, position relative, कैप्शन एलिमेंट्स को स्टाइल करना, तो टेबल के अंदर का कैप्शन सेलेक्टर, कलर जो है वो #356EAF, साइज, तो साइज के लिए क्या था, फॉन्ट साइज 1.3 REM, नॉर्मल वेट, तो फॉन्ट वेट जो है वो
नॉर्मल। ओके, 1.3 EM, नॉट REM। एब्सोल्यूट पोजीशन देना है। मार्जिन टॉप -2.25 REM, मार्जिन लेफ्ट जो है वो 0.5 REM। ओके, टॉप प्रॉपर्टी एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी। Create a selector to target your TD elements. Width 100%. Min maximum width 4 REM. टेबल बॉडी के अंदर का टेबल हेडर एलिमेंट सेलेक्ट करना है। Width of the entire container less 12 RPM। मे बी कैल्क यूज करना है यहाँ पे। यस, दिस वन। Attribute value selector selects targets any element that has an attribute with the specific value। तो हम टोटल को टारगेट करना चाह रहे हैं। बॉर्डर बॉटम and make the font bold। Using the same selector syntax, target the th elements जहाँ पे क्लास टोटल हो। तो th elements जहाँ पे क्लास टोटल हो, अलाइन टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट रहेगा। Padding will be this much। The key difference between tr class total and tr dot total is that the first will select tr elements where the only class is total. The second will select tr elements where the class includes total। Okay, ठीक है। In your case, tr dot total will work। You can use the selector to target all of the td elements within your dot total rows।
The nth of type pseudo selector is used to target specific elements. ठीक है, to target the third TD element. Within your total table rows. tr dot total td nth of type. Okay, nth of type third. Got it. Give your tr dot total elements a hover effect. Changes the background color to 99C9FF. Select your TD elements with the class value of current. TD element, the class value of current. Make the font italic. Font style italic. Font style italic. TR elements, data class, background image, tr dot data के अंदर th एलिमेंट सेलेक्ट करना है. Align the text to the left. Padding top देना है 0.3 rem. Padding left देना है 0.5 rem. tr डेटा के अंदर th, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्लास वाले ब्लॉक डिस्प्ले देना है तो डिस्प्ले ब्लॉक, टेक्स्ट इटैलिक, फॉन्ट वेट हो गया नॉर्मल, पोजिशन देम विद अ पैडिंग सेट. पैडिंग जो है वो ऐसी, मार्जिन राइट जो है वो -13.5 आ रही है. ओके, स्पैन रोल ही हटाना है. Your dollar amounts are currently misaligned. Create a selector that targets the TD elements. Vertically align the text to the top. Horizontally align the text to the right. Set the padding 0.3 rem, 0.25 rem and 0.
vertical align properties set. Okay, so create another selector tr data के अंदर के td elements, but specifically the last one. nth of type 4 कर सकते हैं मे बी, या फिर लास्ट लास्ट ऑफ टाइप कर सकते हैं. padding right and 5 rem. Great. एक चीज पेंडिंग है, लेट्स सी क्या है. डन. ओके ग्रेट. एक बार चेक कर लेता हूँ. सो इस तरीके से बैलेंस शीट दिख रही है, ऑल क्लीन. ग्रेट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम फिर से HTML CSS को कंटिन्यू करेंगे फ्री कोड कैंप पे. इफ यू लाइक द वीडियो, do like and subscribe to the channel, and see you in the next one.